राइट, तो अभी हम इधर वेटिकन से वॉक करते हुए सीधे इस सड़क पे आए हैं. इट इज़ अ स्मॉल वॉक, में अभी 10-15 मिनट की वॉक है. एंड देन जस्ट बिहाइंड मी यू सी दिस बिल्डिंग विच इज़ कैस्टेलो सेंट एंजेलो, कैसल ऑफ द एंजल जिसको आ जाता है. दिस बिल्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ वे बिकॉज इट वॉज बिल्ट इनिशियली एज अ मौसोलियम. इसका पुराना आर्किटेक्चर जो इट वॉज entirely different. It has a base which is square and then it has a rounded building on top. Initially it was built as a mausoleum, किसी king की dead body को दफनाने के लिए. Then later on it became used at many different buildings. So इसको as a prison भी use किया गया, इसको as a papal apartment भी use किया गया. Papal apartments से मुराद वो apartments जो कि popes को दिए जाते थे यहाँ पे रहने के लिए, उसके लिए भी इसको यूज़ किया गया. Then in a Hollywood movie called Angels and Demons has also been filmed within the walls of this castle. उसकी वजह से बहुत मशहूर हो गया. एंड आपने इसकी तस्वीर देखी होगी जो बिल्कुल इसके सामने वाले ब्रिज से इसकी ली जाती है. Nowadays this is important because obviously number one is got ancient history in it. But once you go onto the top there is a restaurant and a bar where you can have sit down and have a coffee and some food, and also get great views of river Tiber, which is just running in front of the castle. And on the other end you can see the whole of the city of Rome, and on one side you can also see St. Peter's Dome जो कि आपको मेरे पीछे इसको शायद नज़र आ रहा है दूर डिस्टेंस में. So it has a central location, it has very great views, it has a history, and at the same time it is a Hollywood movie set. First we are gonna go to the huge castle, and second we are going to go to the new fountain just go to the big fountain. So we've left the castle behind और अभी हम ब्रिज के ऊपर चलते हुए we've come towards the अदर साइड ऑफ द सिटी. मूड ये है कि हमने किसी तरह यहाँ पे जाके ट्रेवी फाउंटेन ढूंढना है विच इज़ अ वेरी फेमस फाउंटेन ऑन दिस साइड ऑफ द सिटी. अच्छा, रिवर पे क्रॉस करते हुए आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रिवर साइड शॉप्स, जो कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी शॉप्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, बार्स हैं, वे यू कैन गो इन एंड स्पेंड सम टाइम. ऑल्सो रिवर साइड वॉक, टाइबर की वॉक जो है ऑल्सो लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग. दे मेड अ होल पाथ and either do a walk or grab an e-scooty, and a lot of people I've seen have been e-scooting along the Tiber River. So sorry, we just missed the castle, but you can see it near on the bridge, and also we are now going through the bridge. Now we have come to Trevi Fountain, which is this fountain right behind us, जो कि आप देख रहे हो. And the pani of this fountain is being carried by aqueducts all the way to the city of Rome from far away. And as you can see, the flow is really huge. यहाँ मैं रात के टाइम आया था to do some photography, लेकिन we had to cancel because no, we didn't cancel. I did some photography, left very early because it was very rainy. So Trevi Fountain is basically to commemorate an artwork. It was a competition between different people, and they asked for some artwork to be displayed on this wall when the fountain was initially designed or built. So over time the city of Rome was destroyed and built, and the whole of this was destroyed. Then the popes decided to get a beautiful fountain made. The fountain currently stands in front of the building of National Building of Graphic Design, National Institute of Graphic Design. They held a competition and a Roman won the competition, and the design of that Roman went on auction. On this very center there is a man who is actually depicted to be Oceanus. Oceanus is the Roman god of all waters, and below the Oceanus you can see there are two people holding horses. One of them is a tamed horse, one of them is bidka hua horse. Or the bidka hua horse is not listening to Oceanus, and the tamed horse is listening to Oceanus. On top of the fountain there's a few Roman sayings
and on the very top there are 4 statues, which is basically to glorify what the water does for them. One of them is holding fruit, which means abundance of fruit. The other one is holding wheat, which shows abundance of crops. The next one is holding a आप कह लो जिस तरह मश्क होती है पानी की, to show abundance of water, and then the next one is holding grapes, which is abundance of wine and alcohol, etc., etc. Okay, so this has now become one of a tourist attraction, because there is a famous legend that if you throw one coin into the fountain, you are bound to come back to Rome. If you throw 2 coins, अगर आप 2 सिक्के फेंकोगे फाउंटेन के अंदर, then you are supposed to meet the love of your life in Rome, which I think I'm gonna be prohibited to do. And then if you throw 3 coins, अगर आप 3 coins फेंक दो पानी में, the person you are traveling with, you're bound to marry them. It's just a legend. Obviously हम लोगों के अपने legends होते हैं और Christians ने अपने legend बनाए हुए हैं. अगर आपने यही आइडिया पाकिस्तान में कैरी करना है तो एक फवारा बनाया है और उसमें कहें कि अगर आप 1 सिक्का फेंकेंगे तो आप हज करेंगे, 2 सिक्के फेंकेंगे तो आपका लड़का पैदा हो जाएगा, 3 सिक्के फेंकेंगे तो शादी करने को तो हर कोई तैयार होता है, तो वो कर लें. तो बहुत पैसे कमाएगा वो बंदा जिसने ऐसा फाउंटेन पाकिस्तान में ईजाद कर लिया. रोमन्स ने ऐसा लेजेंड बना दिया कि हर कोई करने को तैयार हो जाए ताकि सिक्कों पर सिक्के आएँ. About 3,000 euros are in this fountain every day, or millions of euros get donated to a charity for homeless people. So एक charity का notion दे के they make you feel good about throwing money into the fountain as well. I'm gonna do it because Ihan really wants to throw some coins into the fountain, so we're gonna do that. जो हमारे साथ वही मसला हुआ जो मेरे साथ रात को हुआ था. वी वर टेकिंग सम पिक्चर्स एट ट्रेवी फाउंटेन एंड वहाँ पे बारिश हो गई बहुत शदीद किस्म की. खैर हमने 10 यूरो का छाता लिया है और उसके बाद फिर हम चले गए वहाँ पे लोकल एक पास्ता शॉप पे. दे वर क्वाइट फुल एंड उनका किचन जो है वो क्लोज हो जाता है. यहाँ पे दिस इज़ द ट्रेंड के जो दोपहर के किचन है 3 बजे कुकिंग बंद कर देते हैं, फिर शाम को 7 बजे के बाद दोबारा खाने तक. खैर यू कम बैक टू अवर होटल एरिया ट्रस्टवेरे और यहाँ पे वी फाउंड दिस प्लेस विच इज़ कॉल्ड टोनारेलो. and we're gonna have some pasta, some pizza and some salad. अभी हम खाना खाएंगे and that is the end for today. आज हमने बहुत ज़्यादा एक्सकर्शन की है, बहुत ज़्यादा वॉक भी की है. बारिश जो है उस इस इंतहाई अनप्रडिक्टेबल. रोम इज़ अबाउट 30 किलोमीटर्स फ्राम अ बीच. तो आप खुद सोच लो जैसे इस तरह बीच का मौसम होता है उस तरह है. बट द थिंग इज़ द इटली जो है इट हैंग्स आउट लाइक अ बूट. तो इस वजह से यू कैन हैव रेन वेरी इंस्टेंटेनियसली और एकदम से बारिश तेज भी होती है और हल्की भी होती है. एंड नन ऑफ द फोरकास्ट दैट वी हैड सो फार हैज़ बीन एक्यूरेट. तो इस वजह से फोरकास्ट के ऊपर ना आना. हाँ ये फोरकास्ट एक्यूरेट थी कि इस हफ्ते गर्मी नहीं पड़ी जितनी कि एक्सपेक्टेड थी. ऑलराइट तो जी अभी हम घर पहुँचे. पहले मैंने वीडियो क्लोज़ कर देनी थी लेकिन हुआ कुछ इस तरह के
आफ्टर हैविंग आवर डिनर इधन साहब जो है रोई जा रहे थे, तो हम बारी बारी जो है उसको लेके घूम रहे थे। तो घूमते घुमाते वहाँ पे एक मुझे चर्च नज़र आ गया और मैंने कहा चलो अंदर से आके देखते हैं कैसा है। एंड इट वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। वीडियो मैं थोड़ी सी शेयर करूँगा। एंड यहाँ पे जो ट्रेडिशन मुझे एक बहुत अजीब सा लगा ना, वो इस तरह की अपनी बिल्डिंग्स की सीलिंग को इतना ज़बरदस्त किस्म से सजाते हैं। और हमारे यहाँ तो सीलिंग पे कभी नज़र ही नहीं पड़ती। खैर यहाँ पे आके सबसे पहले बिल्डिंग की सीलिंग देखते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि सबसे ज़्यादा डेकोरेशन वहाँ पे होगी। खैर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और खैर पे मैंने उस चर्च का नाम देखा, मुझे भूल गया, मैं आपको नीचे इधर कॉर्नर में शेयर कर दूँगा एक साइड पे। एंड वही बात है कि रोम में देयर इज़ सो मच हिस्ट्री। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेट के लैंड ऑफ 900 चर्चेज में इतने सारे चर्चेज हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव सम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो जिस पत्थर को उल्टाओ अंदर से चर्च निकलता है। चर्च क्या, अंदर से हर कोई ना कोई जो है ना हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट निकल जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी हम जब जा रहे थे ट्रेवी फाउंटेन की तरफ, तो हमें बीच में पिलर्स नज़र आ गए रैंडम ना। तो मैं देख रहा था कि क्या है, तो वो हेड्रियन का टेम्पल था। हेड्रियन वाज वन ऑफ द किंग्स, और उसके लिए वो टेम्पल बनाया गया था। वो पिलर्स अभी तक उधर इंटैक्ट खड़े थे और उनको उन्होंने प्रिजर्व किया और दूर से चलते हुए नज़र आते। एंड देयर सो मैजेस्टिक कि आप उसको मिस नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई इधर चलते फिरते आपको सरप्राइज़ कोई ना कोई मिल जाता है। खैर देयर आर फ्यू थिंग्स लेफ्ट टू डू विच विल डू टुमारो, विच इज़ डे 3 इन रोम। अभी हमने सेंट पीटर्स बेसिलिका भी अंदर से नहीं देखा, वो भी नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। एंड देयर इज़ अ फ्यू मोर थिंग्स जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो मी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। मैं एक फोटोग्राफी टूर की वीडियो बना रहा हूँ, उसको भी देखो। आज मैंने निकलना था रात को, लेकिन प्लान मेरा कैंसिल हो गया। आई एम होपिंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सुबह इंशाल्लाह एक ट्रिप लगा के आऊँगा। और परसों भी सुबह एक मेरे पास एक और दिन है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना। एंड रोम जनरल इन्फो की वीडियो भी मैं चैनल पर लगाऊंगा। तो अगर आपने ट्रैवल करना हो तो डू वॉच दैट वीडियो, बिकॉज दैट इज़ गोना हैव ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स of how to survive. All right, take care and Allah Hafiz.